नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, या बात नहीं करेंगे, बेसिकली आज हम अ, उस चीज़ पे काम करने वाले हैं। जब भी हमारे पास कोई छोटा सा बिजनेस होता है, हमने कोई शॉप खोली है, हमने कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके की साइड हसल कर रहे हैं, राइट, अदर देन जॉब। तो अक्सर उसमें एक फेज आता है जिसमें कि हमारे पास क्लाइंट्स नहीं होते हैं। व्हेन आई से क्लाइंट्स, मतलब वो पर्टिकुलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने वाली थी, अब वो नहीं मिल रही है। समहाउ इट्स बिन लॉस्ट, या फिर वो कम हो गई है, बिकॉज ऑफ एनी एक्स वाई जी रीजन। ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे कि क्या रीजन था क्या नहीं था, ना, वी विल नॉट गो देयर। सो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम जहाँ खड़े हैं और हमारे क्लाइंट जहाँ पे हैं, अंडरस्टैंड, वेर एवर यू आर एंड वेर एवर क्लाइंट्स आर, देर इज अ डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस के बीच में कुछ नेगेटिव एनर्जी है जिसको हमें क्लीन करना है। अब उस क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उस क्लीन करने का सबसे सही तरीका है हो ओपोनोपोनो प्रेयर। वो 4 मैजिक वर्ड्स जिनको बोलने की वजह से हमारे वो बीच के जो डिस्टेंस है वो क्लियर हो जाता है, यानी कि वो जो ट्रैफिक है जो वहां तक पहुंचने का और उनको अपने तक लेके आने का, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर और क्लीन। तो चलिए, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले पहले द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू डू इज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि जब भी हम किसी को कह रहे हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ अस। अब जैसे मान लीजिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट्स, इनके बारे में अगर हम बात करें, तो आप उनको अपने सामने कैसे रखेंगे? सो आप एज्यूम करेंगे कि आपके सामने 10 लोग बैठे हुए हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई नीड 10 क्लाइंट्स, तो मैं उन 10 क्लाइंट्स के लिए करूँगा, दीज आर 10 क्लाइंट्स विच आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। तो मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो हम अपनी आंखें बंद करेंगे, एंड देन विल कम इनटू दिस स्टेट। विल टेक a deep breath. इमेजिन करेंगे आप, लेट मी प्ले म्यूजिक। आप इमेजिन करेंगे that your clients are sitting in front of you virtually. There are two lights. There are two lights. Light number one is on, is lighting on you. आपके सिर से वो लाइट की रोशनी, सफेद रोशनी जा रही है, और एक सफेद रोशनी वो उस हर एक क्लाइंट के ऊपर है। तो आप उनको देख पा रहे हैं, और आप उनके उन सभी के हाथों को अपने हाथों में ऐसे लीजिए और बोलिए, आई टेक 100% responsibility for this issue in my life. I get to overcome only when I take 100% responsibility. And say, I am sorry, my dear client, for not knowing what brought these issues into picture. I am sorry, my dear clients, for blaming you. हम अक्सर ब्लेम करते हैं ना, ये कहाँ रह गए ये सब के सब के बिजनेस वाले, ये क्यों नहीं आ रहे मेरी दुकान में, ये क्यों नहीं आ रहे मेरी जिंदगी में, राइट? We always say like that. So say, I am sorry, clients, for blaming you. I am sorry, dear client, for pushing you so hard. I'm sorry, my dear client, that you don't exist. I am sorry, my dear client, for getting frustrated with you. I am sorry, my clients,
for fighting with you. कभी कभी हम किसी रिफंड के लिए, किसी चीज के लिए हम उनसे फाइट करते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि वो भी हमें, because at the energy level we all are one, right? I am sorry, dear client, for restricting you. I'm sorry, clients, for pressuring you with so many judgment by me and by others. I am sorry, my client, for not giving you enough space to come to me and grow yourself. अब हम एग्ज्यूम करेंगे कि उन्होंने हमको माफ कर दिया है. So saying, please forgive me, clients, for talking bad about you. Please forgive me, clients, for cursing you. Please forgive me, dear clients, for inviting confusing thoughts. Please forgive me, clients, for holding others' garbage on you. Please forgive me, clients, for leaving you alone in the pain and figure out things yourself. कभी कभी हमें कॉल भी आते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, हम क्या करें, बट उस वक्त हम इतने ऑक्यूपाइड होते हैं कि हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते, और हम सोचते कि यार इतने बड़े हो गए तो कुछ तो कर ही लेंगे. बट आई एम सो सॉरी अबाउट इट, एंड प्लीज फॉरगिव मी. Please forgive me, clients, for taking you granted. Please forgive me, clients, for not giving you enough breaks. Please forgive me, client, for not giving you enough time. Please forgive me, client, for not believing in your limitless कैपेबिलिटीज. अब हमने उनसे इतनी बारी माफी की गुहार लगाई है, अब हम इस बात के बारे में बात करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे उन्होंने हमें माफ कर दिया है, राइट? तो माफ करने, जब कोई माफ करता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना थैंक यू, बोलते हैं ना. तब हम बोलेंगे थैंक यू के लिए उनको हम याद करेंगे और कहेंगे Thank you, dear clients, for bearing with me. Thank you, dear clients, for helping me remember all the important stuff. Thank you, dear mind and client, for helping me remember all the important stuff. Thank you, dear clients, for modifying yourself for me. Thank you, dear clients, for knowing that all will be good in the end. Thank you, dear client, for supporting me through tough times. Thank you, dear client, for not giving up on me. Thank you, dear client, for connecting me with all the necessary issues in your life. Thank you, dear clients, for giving me the opportunity to grow. Now you put your hand on your chest, and this time we assume that we have said sorry, we have asked for forgiveness, and the forgiveness has been given. And this is a time when we love them. So say, I love you, dear client, for reminding me who I am. I love you, dear client, for connecting me. I love you, dear client, for showing me that nothing is impossible. I love you, dear clients,
for being there for me on the time. I love you, dear client, for loving me back. I simply love you, dear clients. I really, really, really love you, dear clients. I really love you, dear clients. I really love you. Now we're going to do this prayer for 24 times. So we're going to say, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now, without closing your eyes, assume that your clients who are sitting in front of you, they are flowering, they're showering you with all the blessings and saying that yes, we're going to come into your life, into your shop, into your business, and we're gonna, we're gonna shower all the blessings to you. जब आप ऐसा करेंगे, करने के बाद इसको महसूस करें. तो ये थी हमारी प्रेयर, जिसमें कि हमने अपने क्लाइंट से माफ़ी भी मांगी, उनसे माफ़ी ली भी, उन्हें प्यार भी अदा किया, और इस बात के लिए हमने थैंकफुल हैं, राइट? सो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा इसके बाद कि कैसा महसूस हुआ आपको, और आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, वो इस प्रेयर से ठीक हो सकती है, हमेशा हमेशा के लिए, राइट? अगर आपकी बॉडी में कोई पेन है, आपके शरीर में कोई दर्द है, या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर मेडिकल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके उसको ख़त्म कर देगी. और हाँ, अगर आपका कोई रिश्ता है जो कि बहुत तकलीफ दे है और आप चाहते हैं उसे सही करना, राइट, तो इसमें तो ये मिरेकल साबित होती है. सो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए. और हाँ, अगर आप में से मेरे साथ ये प्रेयर रोज सुबह 5 बजे करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है जिसको मैंने रखा हुआ है. दूसरी बात, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है,
आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। वो मेरा ही व्हाट्सएप ग्रुप है। उस पे मैं रोज एक इनवाइट शेयर करता हूँ और मैं रोज होओपोनोपोनो प्रेयर कराता हूँ। और अगर आपको मेरे कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स जो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी है उसको आप मेरे साथ मिलके 1 to 1 ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए नीचे ये एक फॉर्म है, उसको आप फिल करिए और उसको मुझे सेंड कर दीजिए। आई विल टेक केयर ऑफ यू, दिस इज माई प्रॉमिस। ओके, सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।